एज वी लर्न पहले क्लास में हमने पढ़ा फ्रैक्शंस मीन्स व्हाट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, like fractions, unlike fractions. Okay, now today we are going to learn how to convert mixed fraction into improper fractions. अब मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी सिखाया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन अब दिस मिक्स फ्रैक्शन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो द क्वेश्चन इज 2 3/4। पहले दिस 2 यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड उसके बाद 3 से वी विल ऐड। सो हाउ टू राइट, सी द स्टेप्स। 2 into 4 plus 3. So 2 into 4 plus 3 divided by 4. So 2 4s are 8 plus 3 divided by 4. So your final answer is 11/4. और जब हम आंसर हमको जो मिला, that is which type of fraction, improper fractions. Now let's see question 2. 3/2. Same method, 4 3/12. So पहले हम क्या करेंगे, 4 3/12 we will write 4 into 12 plus 3 divided by, so this divide is for whole divide, 12 4s are 48 plus 3 divided by 12. So your answer is what, 9 10 11 51/12. So this is which type of fraction, improper fraction. Now let's see question 3. 6 2/7. सो हम पहले क्या करेंगे, 6 into 7 मतलब 6 and 7 you have to multiply. After getting the product you have to add 2 to the product. So your answer is what, 6 7s are 42 plus 2 divided by 7. So your final answer is 44/7. Question fourth क्या करेंगे, 9 1/5. So 9 into 5 plus 1 divided by, this divide is for whole, then bracket डाल देना. This is 9 5s are 45 plus 1 divided by 5. So your final answer is what, 46/5. एक और चीज़ नोट करना, ऑलवेज नोट, एक ट्रिक है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, बोर्ड मास, उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास। हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई किया देन एडिशन किया. Why have we done this? Because there is a rule. Brackets of means पहले ब्रैकेट का पार्ट हमको सॉल्व करना है, उसके बाद in case if you have in the solution brackets of, then division, then multiplication, then addition and then subtraction. इसके लिए पहले हमने ब्रैकेट किया और जो आंसर आया उसको हमने ऐड किया. So in this way we have learned convert mixed fractions into improper fractions. Thank you.